Shima, it's live now. Okay, ma'am. Thank you. रशप्रीत आपको होस्ट बना दिया है, तो बी केयरफुल. Okay, ma'am. एंड मीटिंग मत करना एब्रप्टली. Yes, ma'am. और YouTube लाइव भी अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा जब सेशन खत्म होगा, तब एंड करना. ओके. Okay, ma'am.
Chinmay sir, you can start the session now. Yeah, just give me a minute. Is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I hope yesterday everyone must have downloaded and installed WordPress Bitnami. So now you must have question like how to access that. Okay. To access that, just on your Chrome, click on plus button and type 127.0.0.1. I will copy it in chat as well. Just type 127.0.0.1 and you can see WordPress will automatically be accessed. Okay. Then click on access WordPress and then you will see our particular link will change. Currently it is 127.0.0.1. It will change to /WordPress/. This meeting is being recorded. Okay. Now you can see a web page similar to what you can see on my screen. Okay. Just let me know once you reach this particular point where you can see this particular page. Amrita, what exactly is error? Like there might be error code or something might be written. जिन केस में ये error लिख के आ रहा है, the problem is they might have not installed it correctly. Yes. Sir, it's showing awesome WordPress is now installed. Do we have to click the documentation page? No. Visit. If you reach here, you can see there is access WordPress written here. Okay. Sir, do we need to necessarily write this number that you have written? Because उसमें अगर आप go to application में जाओगे, so website will open and then it will automatically take you to this particular page that you are on. Pardon? Sir, I'm saying that without like वो local host के through भी हो सकता, so I did that. So हाँ, like ये जो है 127.0. This is localhost only. This is the okay, IP address of localhost. okay, sir. Okay. Who is having problem accessing Shifa, Tanishka, and Amrita?
So you can try localhost as well. If you can type localhost here. Sorry for that. Actually, since my localhost is automatically linked to this particular IP address, that's why I cannot access localhost directly. But if you are still having a problem, simply click on start button and search for WordPress. Okay, and there you can see many other options, and just click yes, and maybe you can then access start WordPress or something might be written there, or whoever is having problem, they can share the screen. Yeah, you can. I guess I will need to stop. Share your screen, whoever is having problem. Please share your screen. Click on start button. Please share your entire screen, not just the application. I cannot see your screen because you have shared application. Please share your entire screen. Hello. Can anyone please share the screen जिसको भी problem है? Otherwise, if we can continue. Hello, please write in chat. जिसका भी ये पेज नहीं आ रहा होगा, please write in chat. Okay, try this website. अगर 127 वाला IP एड्रेस से नहीं हो रहा है, try this website. सर Yes. जस्ट थिंग, जो निकनेम होता है, जो मतलब व्लॉग क्या लिखा होता है, दैट्स मेरा नेम नहीं आ रहा है, सम रैंडम नेम इज कमिंग, सो ये चेंज हो सकता है? Not now, but it doesn't matter. Well, it will not appear in your website. ओके सर. Okay, those who are having a problem accessing the 127, try to access the localhost.
Tanishka, can you share your screen? Like, I don't know exactly what problem is unless I see. But to make sure क्या आपका WordPress install हो गया था? Here, can you see? Whenever you click on share, there is option to share application and share screen. You can click on screen, entire screen will be present. Okay, whenever you try to share, there is an option called tab, window, and entire screen. So select entire screen. What you can do is just on your start WordPress type करो start menu में and see what comes, and if there is some option to start WordPress, just click there. Any improvement? Not this one. This is kind of you can click on go to application, but still you are not sharing your entire screen. This is just the application. I will not be able to see whatever is happening on your screen. Sir, Yes. after local host, where are we going? Pardon? I said that after local host, where are we going? Yeah, you can click on localhost in Yeah. chat. After that, No, just stay there. After clicking on localhost, just stay there. Okay, she's saying it's done. So yeah, we can start now. Okay, so after clicking on localhost, you might see this particular screen, or if you type 127, click on access WordPress. Okay, then you will have this particular screen. Okay, now to access the admin panel, or you can say the backend of our website, we need to, after WordPress is written, we need to type wp hyphen admin. Okay, can you see 127, and you need to type wp hyphen admin, wp dash admin. Okay, this is the link to access the admin panel. Okay, wp hyphen admin, and you will be reached to your dashboard. Okay, have you reached till here? Sir, please repeat. I lost my network. Just simply type wp-admin in front of your website. It might be the local host or 127.0.0.1/WordPress/wp-admin, like this. Sir, it's showing some website. It's not taking directly to that. Then you must have typed it wrong. wp-admin, like this. Sir, we have to write localhost also, or we can do after 127 point. Yeah, 127 also, it's okay.
So still But the you need to, like, instead of localhost, you can also write 127.0.0.1 slash WordPress slash WP hyphen admin. So we have to write our Let email me- and which password? yes. You have, like, as I told you during the time of installation, that you need to remember your password whenever you were installing Okay, sir. that particular password. So this particular screen here, you can write username or email address and the password that you have set. Okay. सर यूजर Has नेम में जो everyone? लॉगिन नेम डाला था वो लिखना है। हाँ. ठीक है। Sir, we can like access it without changing the URL. We can just go to the main page and from there we can log in, I guess. No. You can never access the admin page without writing WP-admin. Okay, sir. You can access just the normal user wala login, but for admin login, you need to type this. Okay, sir. Once you reach here, just type yes or done. Okay. So now this particular thing is your admin panel or the main dashboard. Okay. Whatever you will do will be done here. Or you can say you can access each and every feature from here. Or this is your admin panel, to be more precise. Okay. Whatever you want to build, whatever you want to create can be done through here only. Okay. So it's not necessary. You can see there are too many things. So it's not necessary for you right now. Okay, the only thing that concerns us, or the only thing that is necessary for us, is this particular thing: post, media, pages, comments, and appearance plugin, like each and everything which is on the left hand side panel. Okay, so now to create any page, okay, each and every page will be coming on the pages only. So in order to create, click on pages. And don't create it now, but you can see there are already two pages available, which is first sample page and second the privacy policy page. Okay, then if we move towards post, there is already one post available, which is hello world. If we move towards media, then you can see it is asking us either library or add new. Currently it is empty. Okay, so basically in media, everything that concerns, like for example our logo, um, or any particular thing, just like जब हम ड्राइव पे अपलोड हाँ करते हैं एनी पर्टिकुलर फोटो, वी नीड टू ऐड इन द मीडिया ओनली। लाइक अगर ये लोगो भी हो सकता है, कुछ इमेज हो सकता है, इट कैन बी एनी इलस्ट्रेशन ऑल्सो, और एनी पर्टिकुलर वीडियो एज वेल, लाइक इधर डॉक्यूमेंट या कुछ भी बोलो, anything that we need to import should be added in the media only. We do not need to actually just add new and select. It will automatically be drag and drop and from anywhere. After that, um, it comes the comments. So here you can see there is WordPress commenter. These are all plugins, and if you click on plugins, this is everything, or you can say these are the plugins which are readily available. But we are going to add few plugins. First, click on add new here. After plugins, click on add new. Make sure that you have clicked on plugins. Okay, now you have two options: first, upload plugin, and second, to search it online. So the plugin that we are going to need is called Simply Static. Okay, so Simply Static नाम का एक plugin है that we are going to need. You can see this particular purple वाला logo. You have to click on install now.
Again, I'm going to repeat. Click on plugin, click on add new plugin, and search simply static. You can see the logo on my screen. The purple logo is the one that we need. Okay, after installing, you can see there is option called activate. I will click on that and plugin will be activated. Now, to see if the simply static is activated or not, you can see here it is written simply static and there is a button for to deactivate, which means it is currently activated. That's why we are getting the button to deactivate it. Okay, so after simply static is activated, you can see on the left hand side there is another option now which is for simply static. So just let me know अगर आपका हो गया होगा तो simply static activated, and then we can move ahead. Done, sir. Okay, so this is the only plugin जो online available है for free and that we are going to need, but there are few more things that we are going to need in order to create a fully functional website that we wanted. Okay, so to do that, I will be sharing a drive link right now. There are just two zip files. No, don't worry, they are just like 11 MB each. Just let me put the link here. Sir, Yes. so can you please repeat, summarize what you said after opening the admin page? Like, I Just forget a my second. password, so I missed that part. Just a second. Until I repeat, I want everyone to download two zip files. Don't extract, don't like install or any, don't do anything with that. Just download two zip files, whichever is there in this particular drive link. Okay. अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता, अगेन मैं एक बार बता देता हूँ. After opening this link, you will see two zip file, dv and dv builder. Simply right click and download. Right click and download both of the files. They are just 11 MB, so I don't think it will hardly take any time. So until then, I'm going to repeat. After reaching this particular dashboard, you need to click on plugin, then click on add new, and here you need to search simply static. Here, and you can see a purple color ka logo. Here there is a install now button. Click on that, and after that you will need to click on activate when the plugin is installed. Okay. Sima, as I Excuse me. told you, yes. Sir, is there any way to access WordPress through Chrome? Like right now, I am accessing it through Opera. Like जब मैं open कर रही Yeah, हूँ उसको तो वो exactly same thing. Sir, but I have posted the link as well. 127.0.0.1. but sir, it's not opening through Chrome. You can access through localhost. Try to access through localhost then. Sir? जो Okay, ओपेरा sir. में जो लिंक है, जो भी लिंक होंगे ओपेरा की, wherever the WordPress is opening, simply copy that link into the Chrome. Okay, sir, I'll try. So, Yes. so when I'm logging in my they are saying that my password is incorrect. But when I log in my Gmail, my password is correct. It is not So the what? Gmail ID password. During the installation also I told you to remember the password. Also, since this is not email ID wala password, so you will have to remember it. I told you yesterday as well, because you cannot click on forget password and OTP will be sent, because everything is your computer only. Sir? Yes. Sir, इसमें मैंने pages
मतलब बाय मिस्टेक पेजेस पर क्लिक कर दिया, तो फिर उसके बाद प्लगइन्स पर जब मैं क्लिक कर रही हूँ तो ये नहीं आ रहा है। पेजेस पे क्लिक नहीं करना था वैसे भी, सिंपली प्लगइन्स पे करना था। बाय मिस्टेक पेजेस पर क्लिक कर दिया। तो प्लगइन पे क्लिक करने के बाद वहाँ ऐड न्यू लिख के आ रहा है नीचे। हाँ आया। तो ऐड न्यू पे क्लिक कर दो। Harsimer, you will Okay, need sir. to uninstall entire thing and install it again, and then try to remember your ID and password. सर कौन से प्लगइन्स डाउनलोड करने थे? वो नेटवर्क आई लॉस्ट इट। एक ही सिंपली स्टैटिक डाउनलोड करना था। सिंपली स्टैटिक सर, आई हैव टू सर्च। ओके ओके। Or I have put a drive link, just download them. I am again repeating, do not extract or do not open them. See, just download the DV and DV builder. Okay, hope सबने डाउनलोड कर दिया होगा जो 2 zip फाइल थी। Okay, now to the main part. Like after you click on plugin, we will again click on add new, but this time we are not going to search, we are going to click on upload plugin. So I'm going to click on upload plugin, and here you can see I am getting option for choose file. I will select on that and I will select the DV builder. Make sure आप DV को select नहीं करना, you have to select DV builder in plugin. Okay, DV builder in plugin only, don't get confused, and click on install now. Okay, अब ऐसा एक्टिवेट नहीं करना है। After installing, don't activate, instead go to appearance, and here on themes you need to click on add new, and again click on upload theme, and this time choose the DV. Okay, थीम में DV V4 114 14.7 ये DV में जाएगा, और DV builder ये plugin में जाएगा। Okay, in theme you need to upload DV v4.14.7.zip. Click on install. Okay, theme installed successfully. Now activate the theme first. Click on activate. The theme is activated. Now go to plugin and activate the DV builder now. सर DV builder plugins में अपलोड करना है ना? हाँ, DV builder plugin में और DV theme में। Here DV builder में click on activate. Okay, now after activating you can see DV here. Once you reach to this position, just let me know, and then we will start with our website creation. सर थीम्स में कहाँ से जाएंगे? क्या? सर थीम्स कहाँ से एक्सेस होंगी? Appearance. ओके सर। सर थीम इंस्टॉल करने के बाद उसे एक्टिवेट भी करना है ना? हाँ, आपको प्लगइन में DV बिल्डर इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट नहीं करना है। प्लगइन में सिर्फ DV बिल्डर इंस्टॉल करना है पहले, फिर DV थीम जो है थीम में जाके DV इंस्टॉल करके एक्टिवेट भी करना है। जब थीम एक्टिवेट हो जाए उसके बाद DV बिल्डर को एक्टिवेट करना। ओके सर। जब DV थीम में एक्टिवेट हो जाए और DV बिल्डर प्लगइन्स में एक्टिवेट हो जाए, जस्ट राइट डन और यस, एंड देन वी विल जस्ट स्टार्ट विद आवर क्रिएशन। सर मेरा थीम में जो है मैंने ऐड तो कर दिया था, अपलोड भी कर दिया था, जैसे ऐड न्यू में,
वो कहाँ दिखाएगा, वो आपने जो बताया DB 14.17 ऐसे करके? वो आपको थीम में ही दिखेगा। आपने थीम में इंस्टॉल मेरा किया, नहीं। हाँ सर, कर दिया था। एक्टिवेट भी कर दिया कुछ था। मैंने ये प्लगइन्स वाला तो एक्टिवेट कर दिया था जो मुझे दिख रहा है सर। नहीं नहीं, जैसे मैंने बोला प्लगइन एक्टिवेट करना ही नहीं था जब तक आप थीम पर एक्टिवेट नहीं करते। अपीयरेंस में थीम है ना सर, अपीयरेंस में थीम, और उसमें अगर मैं ऐड न्यू करता हूँ तो वहां से अपलोड करने का आता है, और उसमें फिर से करूँ आपको अपलोड? डीवी जो है वो अपलोड, डीवी V4.14.7 ये थीम में डालना था, और डीवी हाँ थीम में बिल्डर ही डाला है सर, थीम में ही और डाला है। डीवी बिल्डर प्लगइन में डालना था। अच्छा हाँ सर, ये दिखा रहा है, ये कि इंस्टॉल दिखा रहा है मेरा, इसमें हाँ, थीम उसे इंस्टॉल एक्टिवेट कर दिखा दो। रहा है। एक्टिवेट, मेरा एक्टिवेट बटन हाईलाइट नहीं हो रहा है, कस्टमाइज बटन हाईलाइट हो रहा जैसे कि आप अपीयरेंस में जाते हो है। अच्छा नहीं तो नहीं, यहाँ पे, एक्टिवेटेड दिखा रहा है सर, एक्टिवेटेड दिखा रहा है, हाँ एक्टिवेटेड दिखा मतलब रहा है। एक्टिव है, थीम एक्टिव है। अभी प्लगइन्स में जाइए और यहाँ पे डीवी बिल्डर को भी एक्टिवेट कर दीजिए। डीवी बिल्डर भी एक्टिवेट कर दिया, हाँ सर, डन। लेकिन मेरा सर जैसे ये डीवी दिखा रहा है ना सिंपली स्टैटिक के नीचे, उस तरीके से मतलब प्लग अपीयरेंस में नहीं दिखा रहा है ना वो जो आपने बोला था नहीं, 14 अपीयरेंस में पॉइंट। क्या दिखाना है? ठीक है ठीक है, ठीक है सर, ठीक। सर जब डीवी बिल्डर पे डीवी बिल्डर एक्टिवेट करने के लिए क्लिक कर रहे हो ना, तो वहां पर आ रहा है कि वो पहले से ही है और इस वाली थीम के लिए चाहिए नहीं। यस सर, मेरे में भी सेम आ रहा है। तो आपने फिर डीवी एक्टिवेट नहीं किया होगा। यहाँ पे मेक श्योर कीजिए कि एक्टिव में डीवी सिलेक्टेड है, यस और सर। फिर बाद में प्लगइन्स में जाके इधर डीवी बिल्डर पे एक्टिवेट। So, यस, so I have re-download it. It's showing something like this. When I started logging into it, it's showing the selected folder is not empty. Please select a different folder. सो जस्ट इंस्टॉल इट इन अदर ड्राइव। अगर अभी सी ड्राइव में इंस्टॉल होगा सो इंस्टॉल इट इन डी ड्राइव। Okay. सर मेरे में कह रहा है कि न्यू वर्जन अवेलेबल, अपडेट नाउ, जिस पे वो एक्टिवेटेड हो रखा है डैम में। नहीं, इट्स ओके अभी के लिए। आई गेस 14.7। Sir, is there any alternative to the links that you have sent? Like, because I'm not joined from the laptop, so. No, like this is drive folder, there cannot be any alternative. Okay. By the way, sir, are these themes like paid or are they free if we go through the? Which one? Sir, the one that you sent us. This DV? Yes, sir. DV are both paid and free both. So if you want to access their template gallery, so you will need to pay. But if you are creating something from scratch, then it is free. Okay, sir. Got it. Sir, I can't find the links. Actually, What? it's just went blank and I can't find the links. The chat is all vanished. I can't find the all chats. Okay, just give me a minute. Sir, Yes. sir, whatever you had shared with us, the drive folder, how to install from that, means download from that? I told you earlier as well, like simply the link जो मैंने दिया, click on that, right click on the folder, and there you can see the download button. Here. So, Yes. so if we forgot the password, how can I do it? Like I login and. told you earlier as well, you need to remember your password. इसलिए मैंने ये भी बोला था कि आप चाहे तो 1 2 3 4 ही रख लो, बट आपको ये पासवर्ड रखना याद रखना जरूरी है। तो अभी आपको इसको अनइंस्टॉल करके पूरा वर्डप्रेस वापस से डालना पड़ेगा। सर वो तो मैंने कर लिया, बट उसके बाद जैसे इंस्टॉल करते हैं ना, तो वो नहीं हो रहा है मेरा अभी।
What? So after downloading the WordPress, now we have to install it as well, ना? Bitnami or the drive folder? क्या बात मतलब किस The particular चीज की? WordPress. Yeah, install. You have to also install. That's why I took the entire day yesterday, the last part for installation only. Excuse me, sir. Yes. सर जैसे सिंपली स्टैटिक के नीचे एक्टिवेट और डीएक्टिवेट वाला ऑप्शन चेंज हो जाता है, वैसे बिल्डर के नीचे वो चीज नहीं हो रहा है. सो इज हाँ, इट it's okay. फाइन? Let's see. अगर अभी कुछ issue आता है, then we will see what the issue is. ओके सर. But currently, I don't think. सर इट ड्राइव इज नॉट अ वाले प्रॉब्लम ना. No, एक no. मिनट जी. Let's see. सर Like in future. Like मुझे मेरे इसमें भी लाइक activate लिख के आ रहा है, so it's okay. ओके सर. सर Yes. सर ड्राइव वाले फोल्डर से मैंने उसे डाउनलोड कर लिया, फिर उसके बाद क्या करना है? DB बिल्डर को प्लगइन में अपलोड करके एक्टिवेट करना है और DB थीम को थीम में एक्टिवेट करना है. Excuse me, sir. Yes. Sir, how do we get to know that the plugin is activated or not, like DV? For now plugin छोड़ दो. अगर सिर्फ थीम एक्टिवेट हो गया होगा, then we can continue. Okay, sir. So, Yes. sir, can you please advise me again because मेरा install नहीं हो रहा है वो. What exactly error is getting? Sir, error आ रहा है बार बार if I am तो installing it, ना? error में कुछ लिख के आ रहा होगा ना? How can I know? Yes, sir. Just a second, मैं बता देती हूँ. सर Yes. सर वो मैंने डाउनलोड तो कर लिया है, लेकिन जैसे आपने बोला ना कि 1 to 7 वाला जो लिंक है वो डाल के उसमें करना है, उसके आगे फिर एरर दिखा रहा है, वो उस पे क्लिक होने के बाद एरर आ रहा है. आपको सिर्फ डाउनलोड नहीं करना था ना वर्डप्रेस, इंस्टॉल भी तो करना है. इंस्टॉल किया है, उसके बाद भी तो दिक्कत आ रही है. तो लोकल होस्ट वाले पे एक बार क्लिक कीजिए. उससे भी सर ट्राई कर लिया. तो फिर स्टार्ट में जाके वर्डप्रेस टाइप कीजिए और वहाँ पे फिर स्टार्ट बिटनामी वर्डप्रेस सर्विस कुछ ऐसा लिख के आएगा. स्टार्ट मेन्यू में वर्डप्रेस सर्च कीजिए और वहाँ पे लिख के आएगा. Sir, can I share my screen? Yeah, but just like make it quick because we also need to cover the session as well. Yes, sir. Okay, the only reason yesterday I took the installation because I didn't want today's like session to get through because installation में बहुत time चले जाता है. Yesterday, sir, जब आपने बताया तो मैं उससे पहले इंस्टॉल कर चुकी थी. I think that's why मेरी प्रॉब्लम आ रही है. तो अभी आपका इंस्टॉल हो चुका है या प्रॉब्लम एग्जैक्टली किस चीज में आ रही है? Sir, when I'm installing ना बाबा एरर आ रहा है और या तो कुछ बैकग्राउंड नहीं, कल इंस्टॉल आपने होके ना. इंस्टॉल कर लिया था ना? Yes, sir. फिर आज क्यों इंस्टॉल करना है? सर आपने कहा ना पासवर्ड इफ आई डोंट रिमेम्बर आई हैव टू इंस्टॉल इट तो you अगेन need to डाउनलोड. uninstall it first. सर आई हैव डन दैट ऑलरेडी. So now click on installation then. Why are you extracting it? You need to open. This is an exe file. This is not a zip file. So which one? This one? सबसे ऊपर वाला. You simply need to open. Okay, sir. Thank you. Now I can do it. Thank you. Okay. Let's continue. Sir, just 1 minute. I'm not able to extract What? the themes.
I told you earlier, like I am telling you again, मैंने बताया था स्पेसिफिकली कि आपको एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ उधर अपलोड करके इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट करना है। सर लाइक वो जो आपने भेजा था ड्राइव का, वो मैंने डाउनलोड कर लिया। उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, लाइक समझ नहीं आया मेरे एक्सट्रैक्ट को। नहीं करना, मैं बोल रहा हूँ इसे एक्सट्रैक्ट करना ही नहीं है। फिर सर ऐड न्यू थीम में जाके वो करना है, डीवी का आएगा। हाँ, और जो DV_V4 है वो थीम में जाएगा और DV बिल्डर प्लगइन में जाएगा। DV_V4 is the Theme. plugin and No, it is theme. DV builder is plugin. Please, I request, we have very short time today in our hand and I don't want it to be like go on. That's why I told everyone to be on the same page. Okay. So anyway, जिनका भी बाकी सब हो गया होगा, if you are on a dashboard, we need to create a new page now. So click on pages and click on add new, or simply click on pages and click on add new. Okay, after opening that you can see कि there might be this particular overlay. आप इसे क्लोज कर सकते हो और यहाँ पे लिख के आएगा यूज DV बिल्डर, क्लिक ऑन दैट। ओके, सिंपली क्लिक ऑन स्टार्ट बिल्डिंग और ये आ जाएगा। तो अभी जिसने मुझे पूछा था कि इज इट फ्री और पेड, सो ये जो है स्टार्ट बिल्डिंग एंड क्लोन एग्जिस्टिंग पेज, दिस इज फ्री। बट लेट सपोज आपको क्लिक नहीं करना है, मैं जैसे बता रहा हूँ कि अगर मैंने प्रीमेड टेम्पलेट लिया, so you can see there are various templates readily available, you just need to change the text, but these are all paid. So if you want to create something, you need to click on start from scratch or build your own page. Let me repeat it again. ओके, आपको पेज पे क्लिक करना है, जस्ट मैं इसे रिमूव कर देता हूँ पहले। हाँ, आपको पेजेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे करना है क्लिक ऐड न्यू, यू नीड टू क्लिक ऑन ऐड न्यू। Okay, then here you will have the option click on use DV builder. Okay, after clicking here you need to click on build from scratch and your particular this layout will appear. Just let me know जैसे अगर आपका ये layout आ जाए, then we will continue ahead, and please this time be with me only. I will not repeat most of the part because it should not happen कि we are in the third module and you are asking me the doubts of first module. Okay, doubts are welcome, but make sure that you are asking them at a correct time. Sir, we have to click build from scratch ना? Yeah. अगर ये layout particularly this layout अगर ये सबका आ जाता है, then which means our installation and everything is successful. सर आपकी विंडो पर वो जो डीवी लिखा हुआ है वहां पर मेरे पर अनटाइटल्ड आ रहा है। Which means आपने DV install नहीं किया होगा. You need to click on use DV builder and like go with सर that. किया है, वो सब मैंने किया है। आपने DV theme activate भी कर दिया? यस सर। ये untitled build from scratch पे क्लिक करने के बाद आ रहा है? यस सर। ये I don't think this is possible. If you click on build from scratch, तो एक पॉसिबल हो सकता है आपने पेज के जगह पोस्ट पे क्लिक किया होगा। यस, हेलो, यस सर, आपने वेट, आई चेक एम किया? ट्राइंग। यू हैव टू क्लिक ऑन पेजेस एंड नॉट ऑन द पोस्ट। ओके एंड जिसका भी आ गया होगा, प्लीज इन द चैट सेक्शन कैन यू राइट डन और यस। ओके,
सर ये जो recent posts and recent comments वाला था वो तो मेरा आ गया but it didn't came that build from scratch and that वाला page. ये पेजेस ऐड न्यू किया था पेज पे क्लिक करने के बाद। Add new. पेज पे ना पोस्ट पे ना कमेंट पे, पेज पे ऐड न्यू पे क्लिक किया था। Sir, just a second. सर बस स्क्रैच पे करके बस दैट्स इट ना। हाँ अभी के लिए लाइक ओके सर थैंक यू। ओके आई होप अभी सबका ये स्क्रीन आ गया होगा। ओके नाउ आफ्टर कमिंग टू दिस पर्टिकुलर स्क्रीन there are few things that we need to remember. Okay, currently the website is completely empty. Okay, completely empty, there is nothing there. Still there are a few things that you can see. First one is here the top portion which is called as header, where dv is written, dv sample page uncategorized search icon, these things are written. This is your header. Okay, on the bottom part where black part is there, this is called as footer. Okay, header is always on top of any website and footer is always bottom of any website. Okay, so the middle part which is in between the header and footer will be our main website, or this would be the website which we are going to create. So currently there is nothing, so we will need to add something there. So click on the plus icon and here you will see to insert a row, click on the very first tile, जो एक लंबा tile दिख रहा है, click on there and here it is saying me to insert a new module. Now in DV what happens is there are various modules. It is kind of like Bootstrap. Like in Bootstrap there are list of various modules which we can just add directly. Similarly DV maybe it is same, where we can change select which module we need to add. So for example currently we need to add uh, let's say सर the मेरे में तो simple दो ही आ text. रहा है, एक इंसर्ट रॉ में न्यू रॉ और एड फ्रॉम लाइब्रेरी। प्लस न्यू क्लिक रो करने पे आ ऐड गया। फ्रॉम लाइब्रेरी, उसके नीचे आपको ये दिख रहे होगे ना टाइल्स ग्रीन यस कलर सर, के, यस सर, यस सर। यहाँ पे आपको फर्स्ट रो पे सिलेक्ट करना है। ये दिस इज द लेआउट कि विच लेआउट एग्जैक्टली डू वी वांट. So I will click here and right now what I want is simply a text. So I will write a click on text here and यहाँ पे मैं write कर देता हूँ, so you can see a text will appear. Okay, this is the dummy content where it is written your content goes here, edit or remove this text in line or in module content setting. Okay, this is just a temporary text or you can say a dummy text. And as you hover on that, you can see you have three types of plus icon. Okay, a black plus icon, a green plus icon and a blue plus icon. So the outermost plus icon, मतलब जो सबसे बाहर का plus है, the blue plus, this is the entire module. Okay, so let's suppose if we want to add a new module, like a entirely new section, then we click on blue icon, where there is you can say a big section available. Then within that big section there are green color ka type which is the subsection. Okay, and within that black color this is called as module. So blue one is section, green one is subsections and black one is called as module. So just remember that if I told you to make a module you will click on black, if we told you to make a subsection you will have to click on green, and if I tell you to make a new section you will need to click on blue icon. Okay, now just add your text here. Now let's suppose if I want to edit this particular text, then Sir, you please will need explain the to icon click on again, please, sir. Explain the icon, which is icon.
For what purpose, sir? If you can see on my screen, there are three types of plus. One is blue wala plus, one is green wala plus, and one is black wala plus. So black plus is the module, green plus is the subsection, and blue plus is the section. मतलब सबसे बाहर होता है section, then within the section there are subsections, and within subsections there are modules. Okay, so let's suppose if I tell you to make a new module, then you will simply need to click on the black plus only. But if I tell you to make a new section, then you will need to click on blue icon. Okay, so let's suppose कि after adding the text, I need to edit the text. So just hover, don't click, just hover, and you can see there is a setting button. Click on that setting button and you can see in the content, here is your entire content. Okay, if I want to change the content, I will select everything and write anything on my own. Now if you can see, I have added 1 2 3 4 enters, तो अपने आप in this particular text also enter आ गया. अगर if this text is in my one line only, then this text will also come in one line. Okay, so that is how you can insert text and you can edit the text. Whatever I will write here will be exactly updated there. Okay, that goes for content only. Now let's suppose if I want to change the you can say, just let me edit it again. Okay, now let's suppose if I want to change the style, okay, of this particular text. So what I can do is, after selecting this, or in this particular media where visual is written, I can make sure it is bold or not. So let's select entire content and click on bold. So you can see my entire content is now bold. I will ungroup, and now after clicking on paragraph, you can see there are various options. So when we studied the HTML part, we H1 tag, H2 tag, H3 tag. So these are the tags. This paragraph means the P tag, and this is formatted, which is the WordPress's default, by default, or you can say uh, without formatting wala text, which is usually done for official websites only. But we don't need that. But for now, only thing that we need is if it is center aligned, right aligned, justified, or left aligned. Okay, these are the settings that we can change through the text setting. This is only for text setting. Now let's suppose if I want to change the color of the text, I will click on design, and after clicking on design, I will need to select what exactly do I want to change. Okay, for example, if I want to change the text, this particular text, so I will have to click on text, and here I will have various options like what should be the text font, what should be the font weight, okay, font style, what should be the text color, what should be the text size. This will come under design. So now let's suppose if I want to change the orientation, or you can say the alignment, I will click on left here, and let's say कि if I want to change it, I will select any other option from here. Let's change it from content. अगर ये यहाँ से नहीं हो रहा है तो I will select center align, then again go to design, text. Now what is default text font? Currently a default पे. I can change it to anything. Let's say Acme. See, the font has changed completely. Let's search for any other. Whichever font you will select, it will automatically change to that. Again, my personal favorite are Poppins and Montserrat only. You can directly type MONT.
Yeah. Then in font weight, let it be regular. You can also go light, thin, ultra light according to you. Now we can change the color. We can select any color. Let's say for now blue. And if we want to increase the size, we can do it from slider as well. But 14 is by default font. So currently this is just experimentation. Text alignment, let's keep it center only. And after doing the necessary changes, click on write and changes will be done. This is just experimentation to just let you know or to make you familiar with tools, and then we will, when we are going to create exact website, then just follow the steps that I will consider. For now just explore the options. Again I will repeat, मुझे पता है कुछ कुछ को डाउट होगा. After creating the text, अगर इसे edit करना है, first hover over the text और ये जो black box में setting का icon है, you need to click on here which is called module setting. Okay, now after coming here you can change the text from here, change the alignment and everything from here as well. But if you need to change the color and everything, you need to click on design. Then you want to change the text, so you will have to click on text and change whatever you want from here. You can change the color, text font, text ka size, letter spacing, line height, everything. And after everything is done, you can simply click on write button और वो हो जाएगा. सर Yes. सर जब मैं होवर कर रही हूँ तो ब्लैक प्लस का साइन नहीं आ रहा. सो आप बाहर कहीं भी क्लिक कीजिए पहले और फिर होवर कीजिए. प्लस पे क्लिक नहीं करना है, लेकिन सेटिंग पे क्लिक करना है. सर नहीं आया अभी भी. आपने बाहर कहाँ पे क्लिक किया? इस मॉड्यूल के बाहर जहाँ कहीं भी क्लिक करना और फिर होवर करना. हो सकता है जब आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया फिर ये यूजुअली आता नहीं है. अब बाहर कोई भी पर्टिकुलर पार्ट में जब ये डीसिलेक्ट हो जाए, अगर ये सिलेक्टेड होगा बाय डिफॉल्ट तो नहीं आता है. यू विल नीड टू डीसिलेक्ट इट फर्स्ट एंड देन होवर. सर नोट कमिंग स्टिल. शेयर योर स्क्रीन. You have that page setting open. You don't have anything on your screen, so how can you? You will need to add first. So first add a module. Click on that green plus. Add a text. First select the first column and then add a text. Scroll down exactly. A, B, C, D में arranged है. You have added two text now. I don't think this is text. This is accordion. I told you to add a text. Click on black plus now. Add text only. Specifically mention text. ओके सर. Okay. So yeah, moving on. अगर आपका text add हो गया होगा, now we actually don't need the text here, but we only did this for the sake of experimentation. Okay. After your experimentation is done, to delete this particular text, after hovering on that, you can see there is a delete module icon. Just click that and the module will be deleted. Okay. Now instead of text, if you want to add any other module, you will need to click on plus and you can select any other module. But
if we are going to create a website now, we don't need this particular section. We are going to need a full width section. So what we can do is, on the blue part, you can see the blue wala part, click on delete section. Okay, after deleting section, जो अंदर का black color का module था, that might be deleted. Okay, now click on the add new section. Click on add new section, and here you will have three types of option: regular, specialty, and full width. So now we are going to create our full-fledged website. So you have to create on full width first, and after creating on full width page, you can see there are many options: full width slider, full width post slider, post title, menu, full width image, everything. We are going to click on full width slider. Okay, and कुछ ऐसा overlay आएगा. अभी के लिए you simply click on the tick and we will observe it first. So basically what full width slider is, whenever you click on the icon, this particular arrow, it will navigate you to different slider. Okay. Sir, can Now, you repeat after delete section? after deleting the section, if you have this particular screen, you will need to add a new section. Click on the blue wala plus. Then there is full width. Insert section में full width. Click on that. And here you can see there is insert new module, and there are many other module like full width code, full width header, full width image, full width map, anything. Now you can add either full width header. So let's say अगर मैं full width header add करता हूँ, तो a header will be added, but I want a slider here, like exactly what we prototype. जो हमने Figma में prototype बनाया था, we need to add like that. So we have to click on full width slider, and one slider will be added here. You can click on tick for now, save changes, and we will edit it later. Just let me know कि आपका इस particular screen तक आया क्या. सबका आ गया इधर तक? Okay. Now this is your by default slider. If you can see कि there are two arrows. Whenever you click, it changes and it shows me there. Okay. Now in order to edit the content, I will need to click on the setting, module setting. Okay. Then since अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे there are two slides. There are two dots, which means there are two slides. So whenever you click on setting, you will see the setting of two slides. Okay, so now if we are going to create a college website, there will be different slides, and each slide will have different title, different subtitle, and a register button. Okay, if we want to create more slides, so you can see there is button add new slide. I will click on that. So now अब मुझे 2 से 3 हो जाएंगे. For that, let's say first I add title, so I will write title 3, press correct, save changes. So now I will click on edit again. So you can see abhi I have 3. Your title goes here. मैं इसे edit करता हूँ. I will write here title 2. And इसे भी edit कर देता हूँ. I will write here title 1. Okay.
After reaching till here, you can see कि this is not updated. Okay, if you go to setting, you can see कि there are title 1, title 2 and title 3, but okay, we cannot see the title 3 here. So what we can do is first click on the three dots and click on publish. Okay, basically publish में क्या होता है, it only save your progress. So if we click on these three dots purple वाला, you will ask to save and publish, click on both and फिर बाद में सिर्फ save का option आएगा. So after doing that, you will be able to save the progress so far. Okay, सेव होने के बाद अगर मुझे इस पर्टिकुलर वेबसाइट को वापस एक्सेस करना है, सर मेरा आफ्टर टाइटल सेविंग नहीं इट, दिख रहा है। एक मिनट, जैसे मैंने What? कर तो दिया मॉड्यूल सेटिंग में। व्हाट? सर आई हैव मेक द चेंजेस इन द मॉड्यूल सेटिंग एंड ऐड न्यू करके मैंने टाइटल 3 ऐड कर दिया, लेकिन मेरा दिख नहीं रहा है हाँ सर मेन्यू से। मेरे इसमें भी नहीं दिख रहा है ना, दैट्स व्हाट आई अच्छा सेड अच्छा, कि आफ्टर सेविंग दिस, कि यहाँ पे सेव कर दिया. नाउ टू सी द चेंजेस कि व्हाट एग्जैक्टली आवर वेबसाइट इज लुकिंग राइट नाउ, click on new tab and do the same process again. 127.0.1 click on access wordpress and here आपको कुछ अभी ऐसा स्क्रीन दिखेगा. पहले it was different screen but currently ये एक दूसरा स्क्रीन है. And here you can see there is hashtag 11 no title. This is the page that we have just created. I will click here and you can see यहाँ पे दिख रहा है title 1, title 2, title 3. Okay, this is just the preview. Whenever you type /wordpress, this is the preview. Okay. सर Which हमारे में means पर्पल डॉट्स पे क्लिक करने के बाद सेव ड्राफ्ट एंड पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है. हाँ दोनों करना है, फिर बाद में दोनों हट के सिर्फ सेव हो जाएगा. ओके. सेव ड्राफ्ट एंड पब्लिश का ऑप्शन कहाँ पे आएगा, क्योंकि दिख ही नहीं रहा है मेरे जो। नीचे देखिए, आपको सबसे नीचे पर्पल वाले सर्कल में 3 डॉट दिख रहे होंगे. हाँ हाँ दिख रहा है सर. ओके, क्लिक करूँ उस पे? हाँ आ रहा है, गॉट इट. सेव ड्राफ्ट एंड पब्लिश. सर मेरे में वो करने के बाद जब न्यू वो खोला तो उसके अंदर ये नहीं आ रहा नो टाइटल वाला पेज. नो टाइटल वाला जिससे आपका आप कह रहे थे उसके ऊपर. जगह कुछ और लिख के आ रहा होगा. सर कुछ भी ये नहीं आ रहा. सैंपल अनकैटेगराइज्ड और कुछ भी नहीं, कुछ सर ऐसा लिख के आ रहा है. नहीं आ रहा सर. ऐसा लिख के आ रहा है. सर ये तो इसके बाद कर लिया, इसके बाद एक्सेस वर्डप्रेस करने के बाद ये वाला पेज आ गया हेलो वर्ल्ड वाला, बट ऊपर जैसे आपके आ रहा है नो टाइटल सैंपल पेज और अनकैटेगराइज्ड ये नहीं आ रहा. Okay, share your screen. सर जस्ट अ सेकेंड. सर जैसे ये मैंने ओपन किया था तो जैसे ये आ रहा है. आप इसे फुल स्क्रीन में तो ओपन कीजिए. आप हाफ स्क्रीन में हाउ कैन वी डिटरमाइन? सर पहले नहीं आ रहा था उस समय, मैंने किया था उस समय नहीं आ रहा था. अभी ये है ना नो टाइटल बस. So now moving on, इसका मतलब whatever changes that we have made here is completely changed. Okay, but जो changes we have done is we simply changed title 2, title 1 and this particular thing. But what about the background? So in order to change that, again click on setting and let's suppose we need to change the background of title 1. Okay, for that we are going to need some photos. So let's go to Unsplash
and search for college. We will have some college images. Let's download this. Okay, the next image, let's download this. And one last image. Okay, let's download this one. Okay, we have downloaded 3 images so far. It is taking time to download. It's too slow. Okay, anyway, this image will be downloaded soon. So now in order to change, first let's see that we need to change the background of title 1. So click the setting in front of title 1, and here if you scroll downwards you can see there is an option called background. Don't select image and video, select the background. Now after selecting background there are these options. Okay, if we want to give it a color, so let's say अगर मैं इसे color देता हूँ, so you can change the color from here. But if we wanted a background gradient you know कि we can create different color. Let's add. So this is, there are two types of gradient. So यहाँ पे मैं linear या radial, and this there are two types of color. Okay, if I change the color 1, so you can see upper color change होता है, color 2 से नीचे वाला color. Okay, this is the gradient part. But what if I want to add simply a image? So for that, first of all, remove the gradient from here. In order to remove, let's say add image first. Click on add background image plus ka icon, and here you will have select files. I will select it, and image that we downloaded, select it. It will take some time to load because image थोड़ी सी बड़ी थी. एक बैकग्राउंड वाली पार्ट, बैकग्राउंड में हम लोग गए, ठीक है, इमेज वगैरह सब हमने डाउनलोड कर लिया. उसके बाद सर ये आपको यहाँ पे 3 टैब दिखेगा. ये है सॉलिड कलर, ये है ग्रेडियंट, ये है बैकग्राउंड. जी सर. ये आपको थर्ड टाइल दिख रहा होगा बैकग्राउंड में इमेज का. हाँ हाँ. उस पर क्लिक करके यहाँ पे आएगा ऐड इमेज. हाँ हाँ ठीक है. बस जो इमेज है आपके वहाँ अपलोड कर दो. और कहीं सर कुछ चेंजेस करना है, क्योंकि वो बस चूज बैकग्राउंड इमेज उसके बाद कर दिया, उसके बाद टिक पे करना है क्लिक. नहीं, उसके बाद जैसे बैकग्राउंड सबका इमेज अगर एक बार अपलोड हो गया, नाउ फर्स्ट रिमूव द ग्रेडियंट. सो टू रिमूव द ग्रेडियंट जस्ट ऐसा अगर डाला होगा तो ही ओके, अदरवाइज इट्स ओके. ओके, एक बार बैकग्राउंड वाला पार्ट रिपीट कर दीजिए. let me repeat it from scratch again. Just listen it carefully. This would be last time because we need to cover it further. I am repeating it one last time. If we need to add background image to any like to each and every tile or to each and every slide, click on the setting icon. Then here you will have title 1, title 2 and title 3. Let's suppose I want to add the photo or add an image to the background of title 1. Click setting of title 1. After that
if you scroll down, you will have an option background. Background, after clicking on background, this is your by default background. Okay, now I need to add image here. So you can see there is third tab which is for image. Here you will have add background image. Click on that and select the image that you wanted, or you will have upload and the image will be added. Now what I want is, you can see कि the text is not clearly visible. So थोड़ा सा नीचे करने के बाद you will have background image blend. This is currently normal. Okay, if we click on screen, it will change the color. Now that particular color is green color because within the uh, particular solid color we have selected the teal. Now if you select the black color, you can see the text is more visible now than before, and whatever color we are going to select will be applied there. Okay, now even if you hover there, and you can see in blending option there are too many options. If you select each and every option, you can see कि each time the image is getting different. Okay, but what we can do is just keep it normal. अभी के लिए just keep it normal and just make sure कि in background image you have black color selected. Okay, then click on save changes tick. Okay, then go to title 2. Again same process in the background. First make sure it is black color, then go to add background image. Now add another image. You have to click on upload files, select file, select the second image. Upload, second image will be added. Again click on right, go to title 3, go to background. First make sure it is black color, then go to add background image, upload files, select, and select the third image. Then again click on upload image and images will be added here. Click on tick, save changes. Now click on the three dots and save. Shift save करो. First of all we need to see कि are these changes redirecting or are these changes applying to our website or not. So click here and refresh and click on no title. So you can see कि दो हमने images डाले थे, they are completely applied and they are fully functional. Okay, now comes the part कि we need to make the background, or we need to make the image more visible so that the title and the image, whatever the text is written, we are able to read that. Okay, so again go here, go to module setting, and this time click on design. Okay, now after clicking on design, you can see there is an image. No, I guess image not. First make sure you select the title one, go to title one first, and then click on design, and then there is overlay. Click on overlay. You have use background overlay. If you tick that, then the background color will appear on your image, which means now your text is more visible than earlier. We'll click on tick. Same goes for everything. Design, overlay, use background overlay, correct. Again go to title 3, design, overlay, use background overlay. We will click on save and check the changes. It is not reflected, we need to refresh. Now the text is extremely visible, like from before. Earlier it was not that visible, but now you can clearly read the text. Please give us And we 5 have minutes. added, sure.
I will repeat the process one last time. Click on setting. After adding the image, click on title 1 ka setting, go to design, click on overlay and make sure you select the use background overlay on and click on correct. And you have to do this particular thing to title 2 and title 3 also. And write done or yes in chat once you have finished. तू ऊपर नहीं आ रही क्या? ले, एक मिनट। एक्सक्यूज मी सर। Yes. सर मेरे में इमेज अपलोड तो हो रही है लेकिन वो पूरे पेज में नहीं आ रही है। Have you selected the image and video or have you selected the background? Image and video. You, as I told, you need to select the background. You have to click on the background. Okay, sir. Sir, Yes. sir, how can we view our changes? Click on new tab here and simply type 120 जो भी आपका इधर होगा till WordPress, like whatever you have written here till WordPress. Like अगर आपने local host किया होगा तो local host, you need to click on here access WordPress. तो जो भी आएगा this is your change. Now यहाँ पे no title वाला something must be here. Click on the no title and you will see your website changes. Okay, sir. सर मैंने चेंज तो किया लेकिन दिख नहीं रहा है, मेरा 7 का 7 टाइटल ही दिख रहा है। हालांकि पिक्चर वगैरह सब मैंने एडिट दिख रहा है लेकिन टाइटल आप में एक बार 7 ही रिफ्रेश है। रीलोड कीजिए। रिफ्रेश करूं? आपने सेव किया था? जी सर, और दिख चेंज भी रहा है करने यहाँ पे के वो बाद सारा पेज, और वो सारा दिख भी नहीं रहा नहीं, है लेकिन टाइटल में 7 जैसे ही कि दिख रहा है। आपने यहाँ पे टाइटल 2 में समझ लो कुछ चेंज कर दिया, सो आपको पहले ये जो 3 डॉट्स है यहाँ पे सेव करना है। अच्छा जब अच्छा, यहाँ से ये नहीं सेव मैं हो किया सर। जाए, सेव होने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए तो वो चेंजेस यहाँ पे दिखेंगे। We only you need to use the image overlay. Do not use the text overlay. ये सर मेरा अभी भी टाइटल 7 ही दिख रहा है, जैसे आप में 11 टाइटल दिख रहा है ना, मेरा टाइटल 7 ही दिख रहा है अभी। नहीं तो उससे कुछ नहीं होता है सर इफेक्ट तो दिख रहा है सारा।
जो भी है। हाँ, टाइटल नेम पे क्यों जा रहे हो? नेम पे क्या ही होगा, उस इट डजंट मैटर, अच्छा, जो नेम कुछ भी नंबर है रहे। ना आपका, नंबर जो 7 है, उनसे कोई लेना देना नहीं है सर। नहीं नहीं नहीं, कोई उस इशू नहीं है उसमें। सर आई यूज द टेक्स्ट ओवरले ऑल्सो फॉर एक्सप्लोरिंग, तो वो कोई बात नहीं। ओके, सबके अगर टेक्स्ट ओवरले वगैरह सब लग गया होगा, so we can continue ahead. So this would be our hero section. Okay, but here you can see there is one gap and we don't want that particular gap to be here. So in order to remove this gap, simply ये जो you can see the delete icon, click it, delete section, and now our hero section will be filled entirely to the screen. Okay, so now let's move towards the second part where we will create our about us section or the principal's desk section. Okay, so first of all, to create that, here we are going to click on plus, add new section, and this time we don't need something full screen, we simply need the regular. We'll click on regular, pehla just one row, and we need just title, which means we only need the text. We will click here text, and what we are going to write here is about us. So I will simply remove everything and write about us. Okay, after writing about us, what I want is this particular thing to be heading. I don't want about us to be paragraph, so I will select it, and सर from एक बार paragraph I रिपीट will कीजिएगा change शुरू से, to ये heading जो one. नया आपने स्टार्ट जो किया यहाँ पे। ये आपका हीरो सेक्शन बन गया till here. जी सर। Now we need to add another section. जैसे मैंने बोला, if we need to add another section, we will be clicking on the pink blue वाला, or this time it is purple. So click on add new section, and अभी हमें full width नहीं चाहिए, we simply need the regular section. So we will click here regular. सर तो वो कहाँ After पे आएगा clicking ये? here, यहाँ पे जो प्लस पर्पल दिख रहा है वाले ना, ये क्या? मेरे हाँ पे, हाँ हाँ दिख रहा है, गॉट प्लस पे इट सर, रेगुलर पे। regular. Then we are going to select in new row just this particular simple first type, because we only want you need to understand what exactly do you want. Currently we only want one text, which is just about us wala text. So we'll click here and we will select text. Okay, this will be our text. Now I want there to be written about us only, so I will delete everything and write about us. Okay, but the problem is this is paragraph and I want that about us should be a heading. So I will select the about us, click on the paragraph and select heading 1. So you can see about us will be changed to heading. Now to change the design of the heading, we are going to click on design, and here you can see heading text. Okay, here is heading font. From default we are going to change it to Montserrat. Okay, then font weight should be bold because this is a heading. Okay, then in alignment I want it to be center aligned, and color should be anything. I can keep it blue, purple, anything that suits our college theme. So let's say currently the theme of our college is blue color. Okay, so let's select the blue color, and let's say if there any other option, you can increase the text size, you can decrease and increase, and let's say this size is okay, we can go with this. So after all the things are done, we will click on plus or save changes. Okay, now after हेडिंग का saving सर changes, what? नॉर्मली सर क्या फॉन्ट लिया जाता है सर हेडिंग का? 27 या मतलब 48 या कितना? 48, 72, it depends. Usually 48 होता है H1.
Okay, so after writing about us, now our next requirement is we are going to write principal's desk and director's desk. Okay, for that we are going to need two images. So let's say I want to add a principal desk as subsection, or like in the problem is after creating on subsection I don't know for sure ki what size will that be, because you can know ki this particular blue section is full width. Okay, regularly like it is full width, but when I click on the green plus I need to add a new row or new subsection, and this time I want ki that should be one part image and other part text. Okay, so I will click on the new row, and here there are now options. So now, just if you remember, when we studied or when we learn how to prototype, we have developed or we have designed a layout. Okay, and if you can see the icon, you can see कि ये जो मेरा first column third cell, I mean this particular third option from above, this is exactly the same layout what I used. So I will select that, and you can see कि there are two options now. So on the first side there will be my image, so I will select image from here, and to fill my principal's image, let's say on Unsplash we need to download a image. Let's use this image. The image will be downloaded. Okay, now to add image, here you can see simply after adding the image you will have this section. Click on this and upload files, select the image that we downloaded, and after the image is load completely you can click on upload an image. Okay, now image will be added here. Click on write, and on the right hand side there will be principal's message, or you can say principal's desk or director's desk. So that means this will be the text. So click on text. Here you can consider this to be principal's message, or you can just copy and paste principal's message from anywhere. Let's search on Google for principal's message. फोटो के लिए आपने इमेज के लिए कौन सा मॉड्यूल सेलेक्ट किया था, गैलरी या फिर क्या इमेज? इमेज मैं आप पेस्ट कर देता हूँ. लेट्स सपोज दिस इज आवर इमेज principal's desk, but the problem is कि how will we identify कि this is the principal's message? Okay, which means we are going to need one heading. So इस text में ही मैं text को थोड़ा नीचे डाल के ऊपर I am going to write principal's text. Okay, and I want कि this particular principal's desk should be heading. So I will I will select principal desk and select it heading 2. Okay, and let's click on right button. So this would be our principal's desk. The message will be you can say variable. It will depend on what message do you want to give, or what message do you want to put. And if you think this particular image is too long, okay, so what we can do is we can crop it. Just double click. Okay, go to design, and here you can see transform. Okay, so within the transform, this particular section defines कि
how small or how big do you want it to be. Okay, so if I increase it, you will see images increasing. If I decrease it, you can see images decreasing. But it's better if you don't do anything with the transform. अगर आपको भी लग रहा होगा, so it is an advice to don't do anything inside the transform, because this will decrease the usability, or this will decrease the portability of any particular thing. Basically what it will do is कि if the website is not responsive, this will make it even worse. So let's say our principal's desk is ready. Now we need to create same thing but for director's desk. Okay, so in order to do that, I will not create the exactly same thing again. So what I will do is I will copy this. So after hovering, there are three dots. I will click and you can see there is copy row. I will copy it. Again, I will click here and there is option paste row. I will select that and you can see ये copy or paste हो गया. Here what I need to change is first image. So I will change the image from here. I will need to download another image. Let's download this one. Upload files. Let it download. Sir, how to add a heading? Principal's desk. Wait, let me show. Okay, after image is downloaded, click on select files and select the new image. After it is loaded, इसी के नीचे click आपने on यहाँ भी अल्ट अल्ट ड्रैग वगैरह का ऑप्शन है क्या? अल्ट और नहीं ड्रैग का नहीं, मैंने अभी बताया ना आपको कॉपी रो और पेस्ट रो. I just told you कि here यहाँ पे जो तीन डॉट है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉपी रो का ऑप्शन है. आप इसको कॉपी करो और फिर इसको ही राइट इन तीन डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आता है, पेस्ट रो. जैसे इस पे क्लिक करते हो रो अपने आप पेस्ट हो जाएगा. ओके, एंड अभी जिसको डाउट था हाउ वी कैन ऐड प्रिंसिपल्स लाइक हेडिंग, सो first hover over there, you can see the setting, and in the content, let's suppose there are no heading. Okay, सिर्फ ये content है मेरे पास. So मैं क्या करूँगा कि एक इसको enter मार के नीचे कर दूंगा और I will write here director's desk. Okay. After writing director's desk, if I want to convert director's desk into heading, first select it. डायरेक्टर डेस्क को सिलेक्ट करो पूरा, सिर्फ डायरेक्टर डेस्क को पूरा सिलेक्ट करो और जहाँ पे पैराग्राफ है पैराग्राफ से हटके मैं अभी हेडिंग 2 ले लेता हूँ. ओके, राइट सेव चेंजेस पे कर दो तो वो हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा. सर मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे ऊपर हमने इमेज दिया और मैं चाह रहा हूँ कि वही कॉपी पेस्ट नीचे कर दूं, तो उसके लिए फिर कहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा सर? आपको बताया मैंने कॉपी रो पे और वहीं पे पेस्ट रो का ऑप्शन आता है. सर कॉपी तो कर लिया, ठीक है, कॉपी रो. पेस्ट भी वही से जहाँ से कॉपी किया था वहीं पे उसके हाँ. नीचे पेस्ट रो का ऑप्शन आएगा. अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है. ओके, सबका डायरेक्टर्स डेस्क तक कंप्लीट हो गया.
जस्ट टू चेक कि अगर ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया होगा, जस्ट टू चेक कि हमारे चेंजेस सेव हुए हैं कि नहीं। अगेन सिर्फ ये वर्डप्रेस पे जाके रिफ्रेश कर दो और हाँ, हमारा जो टेक्स्ट था वो प्रॉपरली यहाँ पे आ चुका है। सर कॉपी रोक करके पेस्ट कैसे हुआ था? आपने कॉपी कर लिया? सर यस सर। तो जहाँ पे आपने कॉपी किया था उसी के नीचे ऑप्शन आता है पेस्ट का, पेस्ट रो। ओके ओके। सर जब हमने ये प्रिंसिपल टेस्ट का नॉल बनाना था तो हमने उसके अंदर मॉड्यूल के अंदर टेक्स्ट ही चूज किया था या कुछ और? टेक्स्ट ही था। टेक्स्ट ही था। जस्ट राइट डन और यस इन द चैट अगर आपका प्रिंसिपल्स डेस्क और डायरेक्टर्स डेस्क हो गया होगा तो। तृप्ति, अगर आपको फिग्मा में हमने जैसे डिजाइन किया था एग्जैक्टली वैसा हो ना, सो देर आर फ्यू ट्रिक्स, बट एग्जैक्टली अगर सेम चाहिए सो आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा फॉर रास्टर एंड वेक्टर फाइल्स। Currently that will come under advanced part, so but for now what we wanted is कि at least आपकी वेबसाइट फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट रेडी होके लाइव हो आपकी। सर यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जिससे बॉक्स का साइज जो हमारा से चेंज हो सके, जैसे हम लोग वहाँ पे करते थे फिग्मा में। और मतलब कौन से बॉक्स का साइज? टेक्स्ट वाले बॉक्स का या कुछ? टेक्स्ट का बॉक्स क्या होता है? लाइक ये तो एक पर्टिकुलरली टेक्स्ट ही है, ओके, एंड पर्टिकुलरली जो साइज है ये टेक्स्ट बॉक्स का अगर आपको चेंज करना है सो यू कैन, बट आई विल नॉट रिकमेंड इट बिकॉज दिस विल चेंज। अगर देख रहे हो मैं अपना माउस होवर करता हूँ सो मुझे ऑप्शन आता है यहाँ पे, मैं इसे बढ़ा सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि इसका जब हम इसको चेंज करते हैं तो अलाइनमेंट मुझे, खराब कर देगा। हाँ, सो इट्स ऑलवेज बेटर कि मैं उसको ना छेड़ूं बिकॉज ये प्रॉपर साइज होता है। लाइक फॉर एनी प्रॉपर प्रोफेशनल वेबसाइट ये बाय डिफॉल्ट जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन है वही साइज का देता है बाय डिफॉल्ट। ओके सर इमेज के साइज को कैसे कम कर सकते हैं? आपको इमेज ही वो साइज का रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली इमेज इतना बड़ा है, so let's say कि if I want to change or if I think that image size is too big,
So again, just go to Photopea. The softwares that we studied so far, okay, that will come in handy now. So go to Photopea. It will take some time, I guess. Or we can also use Illustrator here because, but for that we are going to need what exactly is the size that we need. Photopea is best option. Open the photo. ओके, क्लिक ऑन क्रॉप टूल हियर, ये जो क्रॉप टूल है, और यहाँ से सिंपली इसे थोड़ा सा यहाँ छोटा कर लो. ओके, देन फाइल, एक्सपोर्ट एज पीएनजी. जरूरी नहीं ये सब करे, इट विल बी अप टू यू इफ यू वांट टू, इट इज नॉट नेसेसरी. होने के बाद जस्ट इमेज को रिप्लेस कर दो. फोटोपिया से इमेज थोड़ी बड़ी हो गई, मे बी इसलिए शायद ये टाइम लग रहा है अपलोड होने में. Okay, see, it will exactly depend on your image, how exactly your image is. Okay. So जिसका भी डायरेक्टर्स डेस्क तक हो गया होगा, जस्ट राइट डन इन चैट, देन वी कैन मूव अहेड. Okay. Okay, so moving on, the next module that we need to add, okay, is like exactly what we तो our about us के बाद था, if I remember, let's just open Figma and see. We will just take a reference from there. हाँ, इधर था our facilities. Okay, so to create our facilities, let's again click on open new section. ये रहेगा regular section. Now we need to understand how many facilities we have. Okay, if I click here and अगर हम इससे ही copy करते हैं, exactly इसको copy करते हैं, जैसे यहाँ पे our facilities में we have 6 our facilities. Okay, so we will need 6 blocks. So हम यहाँ पे जाएंगे, लेकिन you can see यहाँ पे 6 blocks का तो ऑप्शन नहीं है, बट यहाँ पे 3 blocks का ऑप्शन है. So what we will do is click on the 3 blocks. So this will create 3 new sections or subsections. But here what we have to add, जैसे कि in Figma we have created these icons by our own. So exactly by that we will need to create our own icons. Okay, we cannot just
यहाँ पे WordPress में there is not any option to add a similar plugin where we can add icons here. Okay, so in order to do that, we are going to create our own icons. Okay, so to do that, open your Illustrator, and before opening your let the Illustrator open by itself. Then click on go to the icon flaticon.com website. I will paste the link in chat. Flaticon.com. So here you can find your icons. Okay, so let's say the icons that we need is, first is excellent faculties. So let's search here teacher. Okay, now it is a humble request कि ये जो particular आपको colorful दिख रहे हैं, don't use that, because as said कि if you use colorful images or colorful icons, images is okay, but if you use colorful icon, this will you can say it will not match with your theme. So it's always advisory to use simple icons like this, colorless. Okay, so let's download this image, free download. The image will be downloaded. Okay, the next thing is placement assistant. So let's search your job. Again, the whatever we are going to you can say choose, we need to make sure that it is similar to our previous icon, because it will look uniform. Okay, this icon is similar. Download the icon. Okay, next we need alumni support. First, let's search if there is something regarding alumni. Okay, let's download this image. Free download. Okay, then next part is co-curricular development. अगर co-curriculum नहीं मिला, we can search for sports directly. Okay, this icon is similar. Okay, the next part is cultural fest. Let's just search here fest. And finally, student union. Here it should look like a group. Okay, so these are all PNGs, but what we have to do is we have to make sure that the color is matched. Okay, so go to your website and let's see what is the color of the text. Okay, go to design text. Okay, this particular color, it is #0C7-1C3. Okay, so what we are going to do is we are going to click on create new, or this time we are going to create let's name it logos or icons only, because we are going to create it for website. एंड विथ जो है मैं 100x100 ही रख रहा हूँ, बिकॉज मुझे बहुत बड़ा बॉक्स नहीं चाहिए, एकदम छोटे छोटे बॉक्स चाहिए, एंड मुझे 6 बॉक्सेस चाहिए, तो मैं आई एम सिलेक्टिंग आर्टबोर्ड्स टू 6. ओके, और क्योंकि आई एम क्रिएटिंग इट फॉर वेबसाइट विच मीन्स माई कलर मोड विल बी RGB. आई विल क्लिक ऑन क्रिएट.
Okay, so now you can see the artboard will appear here. Now we will simply place the images. So file, place, we Sir, will please give select all 5 minutes. okay, one I will just show you the result, then you can do that on your own. Okay, these are the images. I will you can do that on your own, like if I show you what exactly you need to do. So our task is to first of all arrange each and every images here. And in this like right below the image, write the text as well. Right here it is excellent faculties. Both of them should be center aligned. And excellent faculties में I will change the font to Montserrat regular, or I will decrease the size. Okay, now what I want is कि this particular icon to be blue. First of all, let's change the color mixer and इसमें hashtag 03 मे भी शायद ये कलर था. Let's see 0C7 1C3. ओके, ये कलर चेंज हो गया. अब आई वांट कि ये जो इमेज है मेरा मेरा उसका भी कलर चेंज हो जाए. So to do that, I will need to convert the image into from raster to vector. So I will select image trace, high fidelity photo, expand, ungroup. Now I will remove the white part, और simply here मैं black part को select करके I will use this color, और ये मेरा icon ready हो गया. Okay, just similarly आप ये सारे के सारे icons बना के रख दीजिए and we will move ahead then. Now you can start creating the icons. आर्ट बोर्ड पे ऐसा आइकॉन सारे रख दीजिए अपने हिसाब से. You can take 10 minutes. I guess 10 minutes would be enough to make this. सर वर्डप्रेस पे कौन सा मॉड्यूल यूज करना है आइकन्स के लिए? आइकन्स के लिए कोई मॉड्यूल नहीं होता है. नहीं सर, जैसे वो मॉड्यूल बोल रहा ना कि सिलेक्ट मॉड्यूल, जब अभी हम तक कोई मॉड्यूल सिलेक्ट नहीं किया है, इसीलिए तो इलस्ट्रेटर हमने ओपन किया. जस्ट क्रिएट आइकन. जैसे ये जो टैब्स दिख रहे हैं आपको, ये इलस्ट्रेटर में से टैब्स बना के रख दो. दैट्स लाइक अब मैंने आपको अभी 10-15 मिनट दिए. यू कैन क्रिएट द टैब.
आई होप सब ये ट्राई कर ही रहे होंगे. इट्स ओके अगर आपके 6 के 6 नहीं भी बने देन इट्स ओके. लेकिन एटलीस्ट एक या दो अलग अलग बन जाए, दैट शुड बी योर एम. टेक अनदर 5 मिनट्स और तब तक जितने हुए होंगे इट्स ओके. इलस्ट्रेटर पे मेक श्योर कि एटलीस्ट 2 या 3 तो भी होने चाहिए एटलीस्ट. Sir, how to convert it into high fidelity file? I have mentioned it in during the Illustrator as well. You need to click on image trace. You do not convert it into high fidelity file. You simply convert it into from raster to vector, not high or low fidelity. In vector format, there are nothing like high or low fidelity. Vector is like कितना भी zoom करो, it will never
give you a blurry image. Excuse me, sir. Yes. Sir, actually, in the beginning, I couldn't follow along. Like when you, वो जो आपने zip वाली file download करने के बाद दी थी ना, so after that I couldn't follow along for some reasons. I'm like it got messed up and वो handle नहीं हो पाया. तो सर मैं अगर आज ना दे पाऊँ तो कोई problem तो नहीं. मैं recording देख के फिर से देख लूँगी. Step wise कैसे क्या करना है because Okay, no worries. टेस्ट के बाद दे दूंगी तो चलेगा ना, लाइक वैलिड माना जाएगा ना, बिकॉज आई गेस टेस्ट होना है, ये ना कि कोई हाँ. क्राइटेरिया हो. Yeah, no worries. किस सर? So let's continue. आपके जितने भी बने होंगे it's okay. 2 बने होंगे, 3 बने होंगे, it's okay. Okay. So first of all we are going to export them. So click on File, Export, Export as. Use Artboard. Now we need to convert it into PNG because we want transparent files. So PNG, and we have selected icons. Simply click on Export. Make sure the background color is transparent and click OK. So all the icons will be exported now. Now go to your website
right here when we created 3 rows. So click on the plus, और अब क्योंकि अभी हमें वो icons डालने हैं, so click on image because we have converted the vector into raster again by exporting it into PNG. Don't select icon. Icon is different thing here. Select image. After that, click here, upload files, select. Now select the very first icon and upload an image. Okay. Same goes for second image. Upload files. Select second icon. Same goes for third. Select the third icon. Okay. Now I will not do entire process again. I will select these 3 dots. ये जो green वाले 3 dots है, I will click here, copy row. After copying that, paste row. और ये 3 icons वापस repeat हो जाएंगे. Now click on the icon, edit, click on icon, upload files, and select the 4th icon now. Same goes for this. Okay. So now my icons will be placed here. So after icons is placed, just let me know हम उसमें hover effect डालेंगे. सर इनको जेपीजी में एक्सपोर्ट करना है ना? PNG में. सर साउंड कुछ भी नहीं आ रहा है. सॉरी, क्या इधर तक सबका हो गया? हो सकता है अगर आपने रिपीट किया हो, इट्स ओके. ये सारे इमेजेस ही है. मैंने उसमें प्लस पे क्लिक करके सिंपली इमेजेस ही ऐड किया है यहाँ पे. ओके. सो अभी व्हाट आई वांट इज कि व्हेनेवर आई होवर, मतलब कि जैसे मैं इस पे माउस लाता हूँ, इट शुड हैव सम इफेक्ट. ओके. सो व्हाट आई कैन डू इज हियर, आप पहले इधर क्लिक कीजिए ऑन फर्स्ट, जो भी आप वॉट एवर योर फर्स्ट मॉड्यूल इज, click on setting, go to design, and here you can see border. Click on border. Okay. After clicking on border, you will see border style, and here is border width. Okay. So इसको currently it is 0, but what I want is कि when I hover तब इसकी width बढ़े. Okay. So to do that, after clicking on border, like hover on border width, you can see there is cursor icon. Click on that cursor icon, and अब मुझे यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे. एक है डेस्कटॉप एंड सेकंड वन इज होवर. सो डेस्कटॉप शुड बी 0 only. Okay. Click on hover, select the border color, and increase the pixels. Okay. Border style should be solid only. You can select any dot
dash, anything that you want. I will keep it solid for now and press right. So now what will happen is whenever I hover, पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ. ओके, आफ्टर सेविंग अब मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ. ओके, यहाँ पे मेरे बॉक्स ऐड हो चुके हैं एंड नाउ यू कैन सी जब मैं होवर करता हूँ तब इसमें एक एनिमेशन आता है. जब मैं होवर करता हूँ तब वो सिलेक्ट हाईलाइट होता है. ओके, अब ये कैसे आया? व्हेन आई सेटिंग, फिर डिजाइन एंड यहाँ पे लिखा है बॉर्डर. आफ्टर क्लिकिंग ऑन बॉर्डर, इन बॉर्डर विथ I selected the hover icon here. Then go to hover, increase the width, select the color and press save changes. Now I don't want to repeat the entire process every time. मतलब मैं इसके लिए वही process, इसके लिए वही process नहीं करूँगा. What I can do is right click and this time it is copy module style. Okay, remember don't select copy module, select copy module style. Okay, so this will copy all the style जो भी हमने apply किया and just same to same paste module styles. It will again same paste module styles और ये सब में मैं एक साथ करूँगा. paste module styles. ओके, ये मॉड्यूल स्टाइल पेस्ट करने के बाद मैं सेव पे क्लिक करूँगा और अभी इसको रिफ्रेश करके चेक करता हूँ. तो देखो जो मेरा एनिमेशन है होवर करने के बाद इट शुड गिव बॉर्डर, वो हर एक आइकॉन्स में मेरा अप्लाई हो चुका है. ओके, सो यहाँ तक करो सब. किसी को कोई डाउट अभी तक? फॉरगॉट टू आस्क. सर वो टेक्स्ट में होवर वाला ऑप्शन कैसे आएगा? I just told you you need to go to design border and then जब आप border width पे माउस होवर करोगे तो आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, आपको कर्सर पे क्लिक करना है. ओके सर. और मुझे है ना वो एडोब इलस्ट्रेटर पे जो आपने आइकन वो बनाया, एक बार मुझे वो रिमाइंड करा दीजिए. What? Sir, using Adobe Illustrator, you created an icon. Just repeat step. आप एक icon फिलहाल है. you can just copy the icon. Like if I repeat the process again, like it will consume more time. अच्छा, हाँ, कोई नहीं. You can just ऐसा दिखने वाला कोई भी you can create for now. And whenever you are creating the website, you can change. Like जैसे कि मैंने ज़्यादा कुछ यहाँ पे किया नहीं था. I simply जैसे कि ये अगर मेरा आइकॉन है, फर्स्ट आई प्लेस, मैंने आइकॉन इधर प्लेस किया, इमेज ट्रेस और हाई फिडेलिटी फोटो. So by doing this, expand and ungroup, by doing this my you can say raster became vector. And अब white part को मैं remove कर देता हूँ and जो black part है I will change it to this color. ओके, एंड सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया था. सर यस.
Can you tell how to place the image again? Actually, I'm not able to do that. Where exactly? Sir, यही website में like you have placed in columns, right? So इसको Like first of all, ये जो प्लस है इस पे क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन रेगुलर. Then here you can see मुझे 3x3 का दो चाहिए, मतलब 2 columns and 3 rows. Sorry, 3 columns and 2 rows. So what I will do is select the 3x3 row. ये इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शंस आ जाएंगे. Simply फिर I will select image from here. Here image, and image में I will select जो we have downloaded or that we have created in Illustrator. See. Sir, I did like that only, but actually it's replacing the image I'm choosing. Share your screen. Sir, just a second. Okay, sir, I figured it out. I figured out what the problem was. Okay. किसी को कोई भी डाउट है अभी तक? अगर लेट्स वाइंड अप कि अगर किसी को कोई भी डाउट है जस्ट टेल मी नाउ. सेशन और थोड़ी देर चलने वाला है, बट अभी तक किसी को कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट है अभी तक, या फिर अगर ये प्रोसेस तक हो गया राइट डन या यस? Sir, can I share my screen? Yeah. Sir, like, sir, is my screen visible? Yeah. Sir, after this, like, I'm doing here. No, what exactly, like, why have you clicked like this? Sir, I just added my modules. No, like, is your screen and my screen looking similar? No, sir.
Okay, because you are in a tablet mode, Hmm. and in tablet mode everything is looking different. So So where custom view is written, click on that custom view. Yeah, create, click on desktop view only. Desktop view. Okay, now whatever you have to do, do on the website only. sorry, sir. Like whatever you want to do on desktop view only. Okay, sir. Sir, actually, I was adding here, like I did this, and I chose the image. I chose the image, and then, sir, when I was adding here, it was not showing like when I added एक image जैसे मैंने add करी तो जब Click. like I added image from here and I did this. So जब मैं second image add करने जा रही थी, so it just replaced the image. जिससे मैंने next image Where add, exactly are you clicking? सिर पहले तो मैं यहाँ पे click कर रही थी. Yeah, I, you have to click there only. so I did the image part. And I did this, but जब ये मे बी सर वो टैबलेट मोड की वजह से ऐसे दिख रहा हो. Yeah. So can you show your screen, please? So please can you hover over an icon? What? Sir, can you please hover over an icon? Like this? Yes, sir. This is just image. It is entirely just one image.
Yakshi, exporting image, like there's nothing to repeat. I have taught you how to export from Illustrator many times. You simply need to click on File, Export and Export as. That's it. Then select the image type. Make sure artboards are selected, and your image will be exported. सर Yes. सर आपने कोई होवरिंग इफेक्ट डाला है क्या इसमें? हाँ, ये वाला. सर कैन यू रिपीट दिस? I thought so that will happen. Let's say first to add this particular image. Let's say that you have added the image. Okay. Now, if I want that whenever I hover my mouse, I need a border over that. So first of all, go to the setting, then design, then there will be border. Click on the border, and here in border style, let it be full only. Okay. Then in the border width, don't change the border width, but when you hover on the border width, there are few options, which is question mark, a mobile icon, and a uh, cursor. So click on the cursor, then two options will be available. One is desktop and second one is hover. So select the hover and increase the uh, border. Now select the color which you want to give and press correct. Now after saving it, whenever you hover, it will create a border here. See, like this. ओके सर. Okay, just last 1 or 2 minutes and then we can move ahead. Just last 1 or 2 minutes. तब तक जितना हुआ उतना रहने दो, and then you can build your website later as well. सर मैंने जैसा कहा आपने वैसा किया, लेकिन हॉवरिंग इफेक्ट हमारे मेन जो उस पे नहीं रिफ्रेश करने के बाद हो रहा आप है. शेयर कर सकते हैं स्क्रीन. एक मिनट सर. पूरा स्क्रीन शेयर ओके. और ये सर देखिए मैंने ये मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है. हाँ, अब दिख रही है. अब मैंने जैसे ही इसे ये मैं वो मेन होगा पे कि आपने डेस्कटॉप पे क्लिक किया होगा, होवर पे नहीं. हाँ पहले गलती से हो गया था. तो एक बार मैं जैसे ये यहाँ पे मैं गया, ठीक है, डिजाइन में गया और बॉर्डर पे गया नीचे और नीचे बॉर्डर मैंने विथ, यहाँ बॉर्डर विथ नीचे. हाँ तो देखिए मैं बॉर्डर यहाँ पे विथ. होवरिंग पे क्लिक किया. करिए क्लिक. नहीं आ रहा सर. आ गया ना. हाँ अब आया. तो अभी अब ये डेस्कटॉप होवर को पे 0 क्लिक. कर दीजिए. डेस्कटॉप को पहले 0 कीजिए. अभी होवर में उसको बढ़ाइए. ठीक है, कलर जो भी है ले लिया. अभी के लिए ब्लैक ही रहने दीजिए, क्योंकि आइकॉन्स ब्लैक है तो ब्लैक बॉर्डर ज्यादा अच्छे दिखेंगे. ठीक है, सेव कर दिया. सेव. आपने होवर पे कितना रखा था बॉर्डर? आई थिंक 7 या 9 रख दिया. देखता हूँ. ओके.
हाँ अब हो रहा है. ओके सर, थैंक यू. गॉट. मूव सर, कोई नहीं. हेलो. Okay, I hope सबने इधर तक कर लिया होगा. So the next part which is remaining is, let's say अभी एक FAQ section डालना है बाकी है और एक बाकी है आर डिपार्टमेंट्स, बट सर उसके स्क्रीन पहले प्रेजेंट कीजिए सर. सॉरी, तो हमारे टोटल अभी 2 सेक्शंस बाकी है, विच इज पहला एक है आर डिपार्टमेंट्स और दूसरा है लाइक FAQ सेक्शंस. सो बोथ ऑफ देम बहुत ही सिंपल है, बट उसके पहले वी हैव मिस्ड वन थिंग कि हमने यहाँ पे एक हेडिंग देना भूल गए, बट इट्स ओके. आप ये सेक्शन और ये सेक्शन के बीच में जो इफ यू कैन सी देयर इज ब्लू प्लस, क्लिक ऑन दैट, रेगुलर single, and this time give text only, and it should be our facilities. Okay, but what I want is कि this particular our facilities should look exactly like about us. So what I will do is I will copy module style, which means it will copy the style of this module, and now I will paste it here. Paste module style. Okay, so you cannot see the difference yet because the thing that we copied was a heading and this is a paragraph. So let's convert it into heading first. Just select our facilities, paragraph, heading 2. Let's keep it center aligned, and this time again design, heading text, Montserrat bold. देखो everything is applied automatically, but maybe कुछ issue हो गया होगा since this is a web based. Let's select bold only and let's copy it again. Let's just copy module. This time let's copy module here, right click and paste module, और R facilities वाले module को delete कर देते हैं, and simply we will change about us R facilities. Okay. The next part we need to create R department. So again पहले blue वाला plus regular, just a second, text. Okay, again जो हमने मॉड्यूल कॉपी किया था, let's just paste it right away.
paste module and delete the extra module. Okay, this time it will not be about us, it would be our departments. Okay, now to create our departments and FAQ section, it is very simple. Okay, so initially we have created 4 departments, correct? So we will again click on the green arrows, add new row, and we will click on 4 rows. Like we have created 4 departments, so we will click on 4 rows. We need 4 rows in total. Okay, and here there is a special option which is called blurb. If you click on blurb, then you can see कि photo and title both comes here. Okay, first let's change the photo. Let's add computer in. Let's add chemical as well. We need total 4 images. Let it download. Let's select it. Third would be civil. Let's add fourth electrical. Okay, until it is downloading. So now in blurb setting here there is 2 things. One is your title goes here. Let's change it to computer science. Text can be यहाँ पे छोटा सा, there can be a description, it's okay. And now in image and icon, by default image is this. Let's change it to first computer. Okay, so you will see computer science wala image will come here. Now we will repeat the same process. Okay, press plus and blurb. Let's change here civil plus again blurb. Your title goes here. Let's change it to electronics. And finally plus again blurb electrical. Now I am not changing the whole entire images and everything yet, because you need to create your images on your own. I mean, go to Illustrator, जो भी आपका image है, make sure you select one artboard size and export the images according to that size only, because अगर image छोटी बड़ी रहे then this will not look good. Okay, currently let's leave our department like this. Let's add our FAQ section. So again plus पे click करिए and again regular. This time it would be single row only, because we need to add the text which is FAQ. I will simply add text, let it be. I'm going to copy this R department wala module, copy module, and after hovering here, paste module. Okay, delete the extra module and here simply write FAQ. Okay, again click on green wala plus, add new row, single row, and this time to add the FAQ, select accordion. Okay, now there are 2 questions. Let's add 2 more. There it would be
क्वेश्चन 3, सेकेंड इसको कर देते हैं क्वेश्चन 2, एंड फाइनली इसमें क्वेश्चन 1. ओके, एंड क्लिक ऑन सेव चेंजेस. तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ, एंड लेट्स सी कि हाउ आवर वेबसाइट विल लुक. सो यहाँ आर डिपार्टमेंट्स वाला सेक्शन ऐड हो गया, और यहाँ पे FAQ वाला अकॉर्डियन ऐड हो गया. अकॉर्डियन सिंपली मीन्स दिस इज क्वेश्चन, दिस इज आंसर. नाउ इफ यू क्लिक प्लस हियर, सो यू कैन सी क्वेश्चन और आंसर बराबर टॉगल होते जा रहे हैं. डिपेंडिंग ऑन विच क्वेश्चन यू वांट टू सी, it will toggle the answer as well. Okay, so try to add this blurb or FAQ. You can skip the blurb वाला. blurb आप add करो, लेकिन don't add the images and text yet. आप simply इसे 4 columns बना के रख दो, because we have limited time right now, so that you can complete the website on your own. You simply need to change the images here. Okay, just try to create blurb, 4 टाइप के blurb जिसमें आर डिपार्टमेंट्स आएंगे. एंड इन FAQ you can write any, like this is question 1 and this will be your answer. Okay, ये जो FAQ वाला मॉड्यूल है इसको अकॉर्डियन कहते हैं. लाइक अगर आप भूल गए तो दिस FAQ वाला मॉडल इज कॉल्ड अकॉर्डियन. ये हो जाए तो मुझे एक बार जस्ट लेट मी नो. कल क्या हम लोग को थोड़ी बहुत समय मतलब मिलेगी 1 घंटा के लिए आपके साथ, क्योंकि जब हम लोग तो तैयार कर लेंगे आफ्टर गोइंग थ्रू द वीडियोज ऑल्सो, एंड देर आफ्टर आप उसमें से कमियां चाहे जो भी ना शॉर्ट कमिंग्स आप एक रिव्यू करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा. क्योंकि ओके, आज तो थोड़ा कल ज़्यादा हम 1 तेजी घंटा रख हो रहा सकते है, हैं. क्योंकि अभी कल हाँ, तक तो ठीक था ना, क्योंकि आज मेन फाइनल वेबसाइट का है क्रिएशन, और आज ही मतलब इस तरह की टाइम नो एक्चुअली मेरी भी कुछ टाइम लिमिट्स होते हैं. हुआ, दैट्स आधा व्हाई घंटा आई हैव लेट टू स्टार्ट हुआ. एडजस्ट. कोई नहीं, हाँ, आपको दैट्स अगर रिक्वेस्ट जो मॉडरेटर है, वो जो भी कोऑर्डिनेटर हैं, कन्वीनर हैं, वो आपसे रिक्वेस्ट करे तो 1 घंटा और मिल सकता है, 1.5 घंटा कल भी, तो कोई बड़ा इशू नहीं रहेगा. एंड सर आई गेस जावास्क्रिप्ट और CSS भी नहीं हमने इंट्रोड्यूस हुआ अभी. हाँ, like we are going to cover after creating the website, क्योंकि the JavaScript and CSS जो यहाँ पे बनेगा, we are going to refer to that portion. ओके ओके सर.
Sir, is this session being recorded? Okay, it's being recorded. So can I leave this session? Actually, I have to do an assignment. Please pardon, I couldn't able to hear you. So I have to submit an assignment by today by 12 a.m. So I'll have to leave the session right now. I'll watch the recording. Okay, sure. And sir, can you tell me the timings for tomorrow if you have an idea? Let me just confirm it with the organizer. Okay, sir. Thank you, sir. सर एक बार ब्लर वाला एक बार ब्लर वाली चीज एक बार फिर रिपीट कीजिए। ओके, ब्लर मतलब कुछ नहीं, जब आप whenever you create something, जैसे कि अभी मुझे एक मॉड्यूल बनाना है, अभी मुझे डिपार्टमेंट मुझे 4 चाहिए। सो जब मैं न्यू रो बनाऊंगा तब मैं सिंगल रो सिलेक्ट नहीं करूंगा, मुझे 4 वाला रो सिलेक्ट करूंगा और उसमें जो पहले ये रहेगा मॉड्यूल, वो मॉड्यूल रहेगा मेरा ब्लर मॉड्यूल। जैसे मैं ब्लर मॉड्यूल सिलेक्ट करता हूँ तो अपने आप एक सेटिंग मिल जाती है जिसमें एक इमेज, एक टाइटल और टेक्स्ट अपने आप रेडीमेड मिल जाता है। सो टाइटल में आई विल चेंज, अगर मुझे चाहिए तो डिपार्टमेंट का नाम, सॉरी यहाँ पे CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो भी आपको लिखना है आप ये लिख दीजिए। और इमेज अगर मुझे चेंज करनी है इमेज, तो मैं स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे अब लिखा है मुझे इमेज एंड आइकॉन, मैं वहाँ क्लिक करके इस इमेज को मैं रिप्लेस कर देता हूँ जो भी इमेज मुझे यहाँ डालनी है उससे। तो एक मेरा ब्लर्ब रेडी हो गया। ओके सर, गॉट। ओके सर, मूव कीजिए आगे।
ओके सर, मूव कीजिए। हेलो, आगे। हेलो। Please wait for 5 minutes. Sir is busy right now. Just for 5 minutes. Hello. Yeah, I just confirmed. So tomorrow we can have one class from 8 p.m. to 9 p.m. Guess there is another function in college, so that's why they will be busy at that point. So we can have class at 8 p.m. and currently अभी तक let's make sure कि at least website ready हो जाए and जो उसके आगे का part है then we can cover it tomorrow. Okay, क्या इसमें किसी को कोई confusion या फिर do anyone have any issue if we take tomorrow 8 to 9? सर 1 घंटे में हो जाएगा तो आप देख लीजिए, कोई नहीं, क्योंकि हाँ, it's a लाइक अभी देखिए फाइनल आपकी कर रहा है। वेबसाइट रेडी है फॉर एग्जांपल ओके। हेडर अगर छोड़ दे तो दिस इज योर हीरो सेक्शन, अबाउट अस, आर फैसिलिटीज, आर डिपार्टमेंट्स, एफएक्यू, इतना सब कुछ रेडी हो गया है, विच मीन्स कुछ अभी आप में पेजेस जो हमें ऐड करने हैं दैट पेजेस ही रिमेनिंग है कुछ कुछ। अगर आपका इधर तक लाइक फॉर एवरीवन, अगर इफ everyone has completed the website till here, then only very few portion is left which can be covered. जैसे कि we have to add pages here, we have to change the logo of divi and add our own logo here, and we need to host our website on GitHub. सर वो कल बिजी हैं तो परसों कर लीजिए, डे आफ्टर टुमारो, क्या दिक्कत है इसमें? उनको 8 ऑर्गेनाइजर से मैं बात करूं क्या? No, it's not like that, but to be जैसे frank 8 अभी to उतना 9 है ना, तो पोर्शन आप बचा नहीं है। हाँ, अच्छा अच्छा। पोर्शन अपना उतना बचा नहीं है, जैसे कि वेबसाइट तो 80% डन है, लाइक हो सकता है इसमें कंटेंट नहीं है अभी, लेकिन जो लेआउट है वेबसाइट का इट इज 80% कंप्लीटेड। नाउ वी ओनली नीड टू ऐड अनदर पेजेस, जैसे कि इफ वी वांट टू क्रिएट सेपरेट डिपार्टमेंट पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, ओनली दैट पोर्शन इज रिमेनिंग एंड दैट टू इज एक्सट्रीमली सिंपल। ओके, सो अगर यहाँ तक सबका वेबसाइट हो गया देन टुमारो विद इन 1 आवर, नॉर्मल पेज से आज थोड़ा फास्ट हो गया, बट टुमारो नॉर्मल पेज से भी वो आसानी से हो जाएगा। सो आप चैट में लिख सकते हैं क्या, अगर हम कल 8 to 9 रखते हैं सेशन, क्या तब किसी को कोई दिक्कत? नो इशू सर, नो इशू। Okay, or tomorrow at 11 p.m. there will be short MCQ test based on whatever we have studied. So you can apply, like the test will be of 30 marks. The test link will be active for let's say around 4 hours, so you can give the test anywhere between 11 to 3 p.m. and tomorrow we will have extra class. So कल एक्स्ट्रा क्लास मतलब अभी तक वॉट एवर हैव स्टडी, अभी आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है तो। मेक श्योर कि वॉट एवर वेबसाइट दैट वी हैव क्रिएटेड सो फार इधर तक तो भी एटलीस्ट बन जाना चाहिए। सर जस्ट एक एफएक्यू वाला जैसे जो होवर करके आ रहा था उसका आंसर, ये उसके होवर अंदर। नहीं, क्लिक करने के बाद होता है, होवर नहीं। सो सर जैसे हमने ऊपर आइकन वाले में डाला था, इफेक्ट डाला था, तो इसके अंदर वैसे डालना है क्लिक करके बस। नहीं नहीं, उसमें डालना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ सिंपली यहाँ पे जब आप न्यू ये करोगे न्यू मॉड्यूल तो अकॉर्डियन सिलेक्ट करना है, बाकी सब कुछ वो ऑटोमेटिक खुद डाल देता है। ओके सर। और सर जब हम लाइक इसको जब बंद करेंगे अपनी साइट को, तो वो डायरेक्टली लाइक बंद होके अगर हम उसको सेव कर देंगे तो वो प्रोग्रेस सेव रहेगी ना? अगर आप ये जो बटन दिख रहे सेव बटन, यूजुअली ये कुछ ऐसा दिखता है, ये 3 डॉट्स, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव करना जरूरी है। यस सर। सेव करने के बाद प्रोग्रेस सेव हो जाती है।
तो सर अब सीधे डायरेक्ट बंद करके जैसे आपने आज खुलवाया था तो ये हम देख सकते हैं उसके अंदर जो अनटाइटल्ड हाँ वाला। ओके सर। हाँ So यस I have a doubt in icons कि जो icons है ना उसमें मेरा ब्लू पूरा हो रहा है, selected part ब्लू नहीं हो रहा। तो जस्ट सिलेक्ट द ब्लैक कलर ओनली, वन बाय वन शिफ्ट करके आप पूरा एरिया सिलेक्ट करने की जगह। ओके सर। हाँ सर, अगर अब हम ये साइट बंद कर देंगे वर्डप्रेस वाली तो ये जो हमने बनाया है वो ऐसे ही रहेगा। हाँ बट मेक श्योर आप सेव कर रहे हो। अगर आपने सेव बटन दबाया है और फिर बंद कर रहे हो देन इट्स ओके। ओके सर। तो अभी बताओ क्या किसी को कोई भी डाउट है? सर मैं चलो अब सर मेरी एक्चुअली क्या दिक्कत है कि जैसे जो कलर आपका है ना, जो कलर में जैसे डायरेक्टर डेस्क हो गया या प्रिंसिपल डेस्क का, उसकी कलर में मेरी चेंजिंग नहीं हो रही। तो उस पर क्लिक करके सेटिंग में और वो कलर में जाके वो करूँ, या भी है फिर भी दिक्कत आ रही है सर? आप जैसे स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके सर। ये देखिए, इसे मैं इसको है ना चेंज करना चाह रहा हूँ, ये कलर का अबाउट इसका अस को कि प्रिंसिपल अबाउट डेस्क अस या प्रिंसिपल डेस्क है चाहे कोई भी है। जैसे मैंने अच्छा। यहाँ पे क्लिक किया, ओके, और ये सेटिंग में मैं गया, सेटिंग में जाके मैंने डिजाइन पे क्लिक किया और डिजाइन में मैं जैसे यहाँ पे टेक्स्ट है नहीं और अब इसके टेक्स्ट थोड़ा ना है, वो तो हेडिंग है क्या ना। है? अच्छा, तो हेडिंग में मैं जाऊँ एक बार, कंटेंट में और हेडिंग में मैं जाऊँ नहीं टेक्स्ट के नहीं अंदर। डिजाइन में ही हेडिंग टेक्स्ट। अच्छा, हेडिंग टेक्स्ट में हेडिंग है ना, डिजाइन में अबाउट हेडिंग अस टेक्स्ट, हेडिंग जी है जी। ना, और प्रिंसिपल्स डेस्क भी अपना हेडिंग ही है। जी जी जी। तो इसमें फिर यहाँ से कलर चूज करूँ, ओके डन, और फिर ठीक है, बाकी कहीं कोई चेंजेस नहीं करना और ये सेव कर दिया। अच्छा अब हो गया। सेम प्रिंसिपल्स डेस्क के लिए, क्योंकि प्रिंसिपल्स डेस्क अपनी हेडिंग है। गॉट इट सर। मतलब फॉर हेडिंग वी हैव टू जस्ट सेलेक्ट द हेडिंग rather than text, ओके। यस सर यस सर एक्चुअली आपने मुझे कहा था ना कि मैं दोबारा इंस्टॉल करूं, वो मैंने किया सब, और मैंने पासवर्ड भी देख लिया, ईमेल आईडी यूजर नेम सब स्क्रीनशॉट भी लिया, एंड देन जब मैं लॉगिन कर रही हूँ ना वहाँ पे एडमिन लॉगिन जहाँ पे आपने बताया था वर्डप्रेस का, तो वहाँ पे ना मेरे बार बार ईमेल आईडी पासवर्ड दोनों गलत बता रहे हैं। मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया। ईमेल आईडी की जगह अपने यूजर नेम डाल के देखें। सर यूजर नेम भी डाल के देख लिया, नहीं हो रहा। पासवर्ड भी 2-3 बार डाल के देखा, बंद करके दोबारा ओपन करके देखा, नहीं हो रहा। सर कोई और सब्स्टिट्यूट है लॉगिन के अलावा, लाइक एडमिन लॉगिन के अलावा? नहीं, अगर वेबसाइट बनाना है तो एडमिन तो लगेगा ही। यू कैन शेयर योर स्क्रीन, लेट मी सी अगर कुछ होता है तो। सिस्टम डिपेंडेंसीज भी होती है ना, समटाइम्स देयर आर सम सिस्टम डिपेंडेंसीज। नहीं मैम होता विंडोज 11 है मेरा, न्यू है बिल्कुल। तो देयर आर सम इश्यूज समटाइम्स। And moreover, sir, the session, this was the final session today, right? Actually, upon request, we have decided to take one extra class tomorrow. Okay. What are the timings you have decided? 8 to 9 p.m. Okay. So this is a request to all the participants not to again request us to extend the sessions, because we have already gone beyond the hours which we had, already thought about. It was a 30-hour session, and whatever content we had thought of, we have already covered.
Rather, we have covered some extra information also. But the thing is, when you are doing such short-term courses, which are involving hands-on sessions, you have to do the practice on your own also. So tomorrow's class, since sir has already agreed, so it will be done tomorrow. But after that, I just request all of you not to request for further extensions. Tomorrow will be the last date, but the exam will be as per which we have decided. The link will be shared with all of you at 11 a.m. tomorrow, and you will have 4 hours to attempt it. Whatever time slot suits you in those 4 hours, it will be a 30-minute test. So you have to do it tomorrow itself. And the last session, as per your request, has been done and has been, now stated to be conducted tomorrow from 8 to 9 p.m. That is all. So kindly, whatever sessions are being conducted, all the recordings are being given to you except yesterday's one, because there was a glitch in the G Suite, due to which we could not record the meeting. You can see all over there was this glitch, and maybe a revamping of the G Suite is required on the institute's end. That is why we have shifted to the Zoom platform today. So kindly go through all the recordings, do the practice on your level. That is how you can learn hands-on sessions. There's no other way. Nobody can teach you, how to learn. You have to practice yourself only. We can only guide you in such short-term courses. So that is my request. Thank you all for joining us. Sir, is it visible? Yeah. Sir, here. Sir, here. Can you apply the username instead of email ID? Yes, sir. Sir, no. Are you really sure, like you have set the same password? Yes, sir. Even I have installed it 2 times. Yeah. 3 times actually. Even I'm trying to delete these 2 now. No, don't delete it. So what should I do now? Just a second, let me bus check. बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है वर्षिका मैम जिनकी आवाज आ रही है प्लीज आप उनको म्यूट कीजिए प्लीज, एक्सटर्नल साउंड इज कमिंग। आसमा मैम अगर आपकी तरफ से जी। I have done that. And sir, आपसे भी रिक्वेस्ट है, ये कल लास्ट सेशन है दिलीप सर। जी मैम थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। हाँ जी। एक्चुअली हुआ क्या, मैंने फीडबैक में भी लिखा 40 था। आवर्स तक कर लिया ये सेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू एक्चुअली या। और वो इनिशियल जो था शुरुआत में वो काफी ज्यादा थ्योरेटिकल था। एक्चुअली कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट बताया था मैम ने। ऐसा तो नहीं था कि वेस्ट हुई क्लास। We cannot say it was that not a class waste of was time. wasted. I am not saying that. Yeah, because their ideas were very good, but she was teaching, But वो भी जरूरी था beginning में, practical part भी, I guess. थोड़ा concept तो clear होना चाहिए कि what we are going to do in this session. Still, we extended our hours of the workshop so that you don't feel like you have done something theory and were not doing the concepts and hands-on.
Yes, sure. Thank you. वंशिका लाइक आई फील मे बी आपका टाइपिंग एरर ही हो सकता है, लाइक क्योंकि यूजुअली अगर यूजर नेम और पासवर्ड गलत नहीं बताता है. You have taken the screenshot, right? Can you refer to that? Also, there is one more announcement. Those students in this group who are interested in more advanced level of graphics, they can contact Chinmay sir. They can have another, a full-fledged workshop or particular thing on that. So those students can enroll for that. So this was one important announcement for all of you, because this was a beginner's level, short-term course for graphic designing and web designing. So those who are interested in advanced one, they can, get in touch with Chinmay sir, and maybe he can create a batch for those students. So for that, you have to pay separately, but some discount will be provided since you have already done the beginner's level course and you have been, already through this short-term course already. So those who are interested in advanced level graphic designing and web designing workshop can get in touch with Chinmay sir after the workshop also. But this workshop is going to end tomorrow, definitely. The current one. Thank you so much, ma'am. I hope you किसी को doubt ना हो. And वंशिका, like जो आपका username और password का doubt है, I guess that should be a typing error only, like because username and password should always be same. Like even caps lock का भी फर्क आता है so password में, so it will not detect. सर आई एम ट्राइंग, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं आपको कल बताऊंगी. Okay. Apart from this, किसी को अभी कोई भी doubt हो, so they can ask, or else we can end the meeting here. Okay, I hope कि अभी तक कोई doubt नहीं है, so we can continue it tomorrow for our final session. Only like website creation with just very few topics are remaining which would be covered, and tomorrow you will have your own website live and ready to use, where you can share your link and website can be shared to anyone with that link. Okay, so again thank you so much everyone. Let's meet tomorrow and be prepared for the test. Tomorrow I will share the link for the text at tomorrow 11 a.m. Thank you so much, sir. Now may I end the meeting? Sir, may I end the meeting? Yeah. Yes, Lashri. Okay.